and good evening everyone. I please welcome Mr. Mehakdeep Singh to come upon the stage and continue with the welcome address for the respected speaker, Mr. Gaurav Vasishta. Please, Mr. Mehakdeep. Good afternoon, everyone. Thank you all for coming here, for keeping out the precious time of your busy schedule, and all of you, we welcome you over here at ISB. So today's topic that masterclass is going to be about, as you can directly see, sales deep dive in the multi-channel marketing. And the host for today's masterclass session will be Mr. Gaurav Vasishta. He is the CEO of Salesamore and also known as Sales Doctor itself. And in this masterclass, we are going to cover about the few of these certain key aspects that we are already circulating about. So it's about building a multi-channel sales system that will be bringing up the constant leads, and what is the 9-point B2B client acquisition framework, and how to align the outreach, content, and authority for the max conversions. And last but not the least, how we can also be discovering about what's working right now in the real world campaigns. So these will be all the points that will be covered in today's masterclass by the sales doctor itself. Now, by not taking much of your time, I would like to invite the hero of today, sales doctor, Mr. Gaurav Vasishta, to the stage. Thanks, Mehak. Alright guys, like I said a few minutes ago, today we're not going to do Gyan, okay? What we're going to do is, we're going to go deep into the science and psychology of sales. I'm going to make it very interesting. I'm not going to make it like, वो कहते हैं ना, कि master class है तो actually master class है, right? So it's going to change. There you go. So basically, very clearly, this is what I'm going to cover actually. I'm going to go deep into sales. I'm going to reframe that the way we think sales. I'm going to give you a formula which is going to change the way you look at sales forever. I'm also going to tell you my tricks of closing. I did close about 100, high energy please. So I did close about 150 plus B2B accounts last year. So I should be good at it. And then I'm going to go practical into it, that how do you implement things? How do you actually set it up on the marketing front? And then, the most important, we are going to go into each one of you. How do you turn yourself into a brand that sells? So, it's going to be a complete workshop. अभी हम लोग बिल्कुल patient रहेंगे, and मेरे को एक request है, just one request. If we really feel we come here to get some value, तो थोड़ी एक घंटे के लिए, can we actually put our mobile phones on silent? Instead of कि वो सारे लोग कभी किसी का बज रहा है, किसी का कुछ है, सबके लिए, for everybody's बस mobile phones on silent. I don't want you to switch them off. Silent पे रखो. If you do get an important something, just slide away. वगैरह ऐसे मैंने तो बड़ा किया ऐसे. So sales. Let's get into the mood of things. Let's get into what is required for sales. The number one thing that is required for sales is actions, right? So let's all stand up and let's find our actions. सारे मेरे साथ खड़े होंगे please. There you go. There you go. More साहब उठा दिया बात बता दीजिए. Sorry adventure तो आगे तो सारे लोग मुझे actions का A दिखाइए. ऐसे कीजिए. Actions का A दिखाइए. ठीक है? उसके बाद मेरी आवाज आ रही है? Right? अभी actions का A आ गया. अब इसको हमने मिलाना है opportunities के O से. अपनी मुट्ठी ऐसे बनाइए. सारे लोग ऐसे मुट्ठी बनाइए. अपना left foot थोड़ा आगे कीजिए. लेफ्ट फुट आगे कर लिया, थोड़ा सा बेंड कीजिए और चेक कीजिए चल रहा है कि नहीं. चल रहा है? सबका चल रहा है? ओके. सो ए को पकड़ा, एक्शंस के ओ तक लेके आना है. पहली बारी मैं करूंगा, उसके बाद हम सारे इकट्ठे करेंगे. ओके? कैसे करेंगे? ए ओ, ऊपर से नीचे बेंड करके वो चेक करना है ऐसे, फिर उसको ओ में एंड हमने बॉक्सिंग पोजीशन में आना है. डन? सो फिर से ट्राई करेंगे. ए को पकड़ो, लेफ्ट फुट आगे
अपॉर्चुनिटीज को आगे लाओ एंड लेट्स गो। ऑलराइट, लेट्स गेट into it. Come on guys. Aj, it's going to be a great session and we're going to have fun because you are now with somebody who loves sales. So, वो कहते हैं कि why am I here? Why should I be even telling you or talking to you about sales? So basically, I was introduced. I've always done sales in my lifetime, but I never knew it was my superpower. I never realized that I was very good at it. I never realized that I could sell it as a service. There was one opportunity. There was one member who was also a TiE member. जिसने मुझे actually कहा कि this is what you need to be doing because you're very good at it. And I thank, he's not here, but I thank Harit for it. Harit is the person, Harit Mohan, ex-president TiE, TiE Chandigarh. He was the person who actually identified and looked at me and said, this is what you need to be doing and this is what you go for. And उस दिन और आज में ये फर्क है कि I have been able to create systems for other people. बड़े पंगे लिए, बड़े हाथ पैर मारे, बड़ी गलतियां की, किसी का चला, किसी का नहीं चला, and फिर वो reasons ढूंढे, किसी का क्यों नहीं चलता है, what's going on in the world of sales. So I've mastered the psychology of sales. I'm writing a book, by the way, some book please खरीदना. It's going to be called Sales Vedas. It's going to come. It was supposed to come in February, but AI आ गया. AI आ गया तो मेरे को अपने chapters को change करना पड़ा. I had to upgrade my own book, and लिखते लिखते मैं पागल हो गया, book नहीं खत्म हो रही है. But soon I found my publisher, and it should be on the shelves in 2 months' time. So please support me there. $36 million of sales in the last 12 months. That amounts to about 300 crores of business. And that's why I'm good. That's why I'm qualified to be here. Something very interesting about me. Most people don't know, but I'm very well traveled. But मेरा जो सबसे अच्छा part है, मेरी creativity है, मैं 5 languages बोलता हूँ. कोई पूछो कौन सी 5 languages बोलते हो? कौन सी? Yeah, ऐसे ही. So हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तो सबको आती है. But अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं दुनिया का सबसे यूनिक बंदा, मेरे को I don't think so लाइफ में कभी भी कोई ऐसा मिलेगा जो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी के अलावा स्वीडिश बोलता हूँ और थाई बोलता हूँ. थाईलैंड के नाम पे स्माइल्स आते हैं, मैन के नाम मैन all smiles there. So yes, मैं थाई भी बोलता हूँ. मेरा नाम का थाईलैंड से है, थाई डायना and jag Sweden rहा बड़े सा तो jag är pratar svenska och jag är duktig på det. That being said, मैं एक किताब लिख चुका हूँ, startup just startup, and मेरी सेकंड आ रही है. अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. आपके पास अगर कुछ लिखने के लिए नहीं है तो please do take some notes because मैं ज्ञान नहीं देने वाला. I'm going to go into equal things, some formulas, some actionables, and we are going to actually dissect sales and then put it all back together. Fair enough? So हम उसको खोलेंगे, वो experiment करते थे, लड्डू खोल देते थे, तो हम sales को खोलेंगे and फिर उसको we put it back together and make a strategy जिससे all of us can build a sales engine. Is that fair? मजा आने वाला है? Let's go for it. So 9 insights and let's start at number 1. Number 1, मुझे आप लोग बताएंगे कि when does somebody buy from you? वो ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण आपसे कोई कुछ चीज खरीदता है? Anybody? Need. Okay, need करके खरीदता है. Story करके खरीदता है. Greed करके खरीदता है. So phone shut. मैं another तक confiscate कर रहा हूँ. ठीक है? हाँ? शाबाश. Yes. Trust. Fear करके खरीदता है. Okay. Expertise. Okay. Likability के करके खरीदता है. There is a magic triangle and Anil ने बिल्कुल ठीक बोला.
the number one factor, बिल्कुल ठीक, the number one factor why somebody buys from us is trust. ये सब greed, need, ये सब गलत statements हैं, इसको अभी भूल जाओ. कुछ सीखने के लिए you have to unlearn also. Learn करने के लिए कभी unlearn करना होता है. और हमेशा याद रखना कि जो मैं बोल रहा हूँ अभी ये साइंस को. Trust is number one, credibility is number two. You were right, credibility. Third क्या हो सकता है? क्यों कोई किसी से खरीदता है? Come on, सोचो. आप हर रोज आप सारे बेचते हो. क्यों खरीदता है? USP, okay, value proposition. ईशा को पता है. ईशा बता देगी. ईशा spend a lot of time with me. After sales services, okay. Okay, Isha, बताइए दो. Experience नहीं. Authority. So the triangle is TCA. हमेशा इसको याद रखो. आपको कभी भी अगर कुछ किसी को बेचना है, तो आपको ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, या क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी, या अथॉरिटी बनानी पड़ेगी. आप इसके अलावा उसको बेच नहीं पाएंगे, राइट? सो जब तक किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का, किसी भी इंडिविजुअल का, इन तो इसको कहते हैं ये मैजिक ट्रायंगल, एंड एवरीबॉडी हैज टू स्टार्ट हियर. सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू टुडे, आई विल ब्रिंग इट बैक टू द मैजिक ट्रायंगल. आई विल ऑलवेज ब्रिंग इट बैक टू कि इसमें ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी कैसे बन रही है, राइट? सो आगे बढ़े. सो सेल्स को एक डिफरेंट नजरिए से देखते हैं. And हमेशा के लिए let's learn what actually is sales, what actually is supposed to happen. And you will realize almost 99% of the times sales is change management. Now, when I say it's change management, just a quick check. English, Hindi, mix. English से सारे कौन सारे बिल्कुल comfortable हैं? Most, right? And जो चाहते हैं मैं मिक्स करूं हिंदी इंग्लिश मिक्स. ओके, थोड़ा सा मिक्स करता हूं. ओके, सो सेल्स बेसिकली इसको ध्यान से समझो बिकॉज़ ये ही टोटल साइकोलॉजी स्टार्ट हो गई. सेल्स इज चेंज मैनेजमेंट. सर आज आपको थाई और स्विच के वर्ड सर हंड रखो, अपना ट्रिप बाद से प्लान करना, हाले ऐसे सेल्स पे फोकस. सो लेट्स अंडरस्टैंड चेंज मैनेजमेंट. एक हमारी होती है जिसे हम कहते हैं करंट स्टेट, और एक हमारी होती है डिजायर्ड स्टेट. ठीक है, इसको ध्यान से समझना. किसी को कोई चीज हमेशा चाहिए होती है जो उसको मिल नहीं सकती. ओके, एंड आई विल टेक एनी एग्जांपल्स. वी कैन टेक एन IT सर्विसेज एग्जांपल. यहाँ बहुत सारे ने कहा वी आर इनटू IT सर्विसेज, वी कैन टेक दैट एग्जांपल, राइट? बट किसी को कुछ चाहिए होता है जो वो पा नहीं सकता है, एंड यू हैव टू आस्क व्हाट डू दे वांट से ज्यादा. जैसे आपने बोला ना नीड, आपने बोला ग्रीड, आपने बोला किसी ने अलग अलग चीजें बोली, बट उसके रास्ते में क्या. जिस दिन हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, उस दिन हमने समझ लिया, वी ऑलवेज देन अंडरस्टूड what exactly we have to offer, what exactly do I have to reframe, what exactly do I have to do to get them to their desired state. इसमें से मी हटा देना. So ये हमारे बारे में नहीं. It is always about your customer. It is always you have to work on your audience. So what you have to realize is this is their current state, this is their desired future state, and उसके बीच में कोई बाधा है. There is something that is stopping them, and हमारा जो भी काम है, हम सब का वो ही बंद करना है. That is sales. So the obstacle and challenge that gets in their way, जो के रास्ते में आया हुआ है, उसको हमने निकालना है. एंड आगे बढ़ेंगे, एंड मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा आपकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए कि एग्जैक्टली वो चैलेंज भी क्या होता है जिसको हमें हटाना होता है, बिकॉज वो भी फिक्स है.
Best part is, because we're going to science of sales, that is also fixed. That means all we have to do is we have to keep tweaking ourselves to fit this. So we have to always understand there has to be some transformation. There has to be some change that people are willing to pay for, and that is what we have to achieve. That is sales. अब जब तक आप उसके लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, you are just convincing yourself कि आप कुछ बेच रहे हैं, because वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही वो आपको कोई पैसे देता है. Let's say कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, उसको वो ऐप चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि उसका काम आसान हो रहा है या उसके बिजनेस के लिए उसको चाहिए, बट वो एक चेंज है उसके लिए. एंड क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ही डजंट हैव द मे बी द स्किल्स, द टाइम, द रिसोर्सेज. उसके पास ये सब चीजें नहीं है, उसके पास एक्सपर्टीज किसे बोला था, राइट? वो नहीं है उसके पास. अगर नहीं है तभी आपके पास आता है, राइट? देयर इज अ वेल्थ मैनेजर देयर, राइट? वो क्यों खुद नहीं कर सकता? बिकॉज उसके पास वो स्किल सेट नहीं है. एंड उसको क्या चाहिए? फ्यूचर में एक वेल्थ चाहिए या उसकी एक ड्रीम है जो वो पहुंचना चाहता है, एंड यू गिव देम दैट पाथ. किसी के करियर एज अ लॉयर you are giving them the path, you are taking away the risk away from them and giving them a solution. Change. Always sales is based on change management. Everybody with me? Yes. Great. So what are the top sales principles? We're going to cover 5 of them, okay? And बिल्कुल basics में जाके उसको applicate करते हैं, ठीक है? पहले basics समझेंगे, foundation बनाएंगे, and then we turn it into a formula of how do you create value out of it, right? So, हमेशा never sell your product or service. Always the outcome, always the result, and always talk about results and benefits. You never talk about your product or service. फिर से repeat करते हैं. You never talk about your product or service. You only talk about the results or benefits to the person you're selling. Never. मतलब ये never वाला है. जिसने ये नहीं किया, जैसे लोग कहते हैं ना, I am so and so, I am so. फिर बीच में अब चेंज होने लगे, लोग कहते हैं I help so and so people get those this. उससे भी बेटर हो गया. उससे भी बेटर क्या हो गया कि लोगों को टिपिकली ये चैलेंज होता है, हम उनके ये चैलेंज को ऐसे ठीक करते हैं. So वो सारी साइकोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है towards कि never talk about your product or service. Always on your websites, on your posts, on your communication, everything that you're communicating to your potential client with, you only talk about the results and benefits they will get. And how will they get there? You are the change manager. You will get them from their which state, current state, to their desired future state, and by removing that obstacle. And ये है psychology of sales. Everybody with me till now? Yes. Excellent. Second, everybody has to always, work on this ratio, value to price ratio. ये increase कैसे होएगा? Value increases. अब कोई कहेगा price कम कर लो, वो गलत है, वो formula गलत है. Price कम करके you can never keep going forward because there will be somebody who will always have a lower price for you. कभी हमेशा के लिए याद रखो. The formula is value divided by price should be a higher number. 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए. Perfect is 3. So anybody who can increase the value to price ratio is the person who's starting to give the right solution. That means वो जो हम results and benefits दे रहे हैं, they have to be backed up by the value that you give to the other person. जैसे अपेल ने बोला था USP, because basically USP और value proposition आपका क्या है? Value proposition को बढ़ाते रहोगे, वही आपका uniqueness आने लगेगा. How do we actually sell? We start decommoditizing ourselves.
IT सर्विसेज यहाँ पे सबने बोला IT सर्विस अलग क्या एंड अलग कैसे करते हैं जब हम अपने आप को ठीक मोनेटाइज करते हैं कि हम अपनी यूनिकनेस बना लेते हैं। अब वो यूनिकनेस कैसे बनती है? यूनिकनेस एंड में बताओ कि अपने आप को यूनिक कैसे बनाया जाए एंड मैं दिखाऊंगा। सो उसके बाद डोंट बी ग्रीडी का मतलब है डोंट बी ग्रीडी सिंपल इंग्लिश मीन्स स्टॉप थिंकिंग अबाउट मेरे को क्या मिलेगा एंड यू प्लीज स्टार्ट गिविंग। द मोर वैल्यू से स्टार्ट किया द मोर वैल्यू यू विल गिव, जितना दोगे उतने से ज्यादा वापस आएगा। The greedy part is always we say let's get the best. All our discussions is our targets, our goals, our numbers. हम सब अपने नजरिए से सोचते हैं. I'm guilty of the same thing. Most of the times we are always thinking numbers, right? But the idea is we get greedy there because we're thinking targets, we're thinking numbers. But the moment we start thinking value to price ratio, and we think from the customer point of view, how can I increase the value to them? You will suddenly realize that your formula gets better and better. I'm going to get to the formula. I'm building it up actually, guys. What you will notice is I'm building everything up. The next is don't be needy. So we do questions in the end. Yeah. So don't be needy means that you cannot be desperate whenever you sell it. जैसे ही desperation दिखा दी, you are now trying to do the number one blunder that all of us, have been guilty of doing. We try to convince the person. अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ा English language पे play है, इसको फर्क समझना. Never try to convince a person, try to persuade them. If you understood this, अगर किसी को भी समझ आ गया, आपको समझ आ गया कि this comes from don't be needy. हम जितने needy हो जाएंगे, जितने desperate हो जाएंगे, हमें उतना ही मुश्किल हो जाएगा कुछ भी बेचना. जितने हम advisor, हम guide बनेंगे, हम consultant बनेंगे, in tech field, in legal field, in financial field, in HR field, every field, what you will realize is it is most paramount that you are, when you are selling, you're not trying to convince a person, you're trying to persuade them. How do you persuade them? By becoming the guide to them. With the mindset transformation course, right? So we are always trying to guide them. Guide means persuade them. Don't convince them. Convincing मतलब मैं थोप रहा हूँ कुछ. And जब वो needy हो जाओगे, आप convince करते रहोगे. मैम फोन नहीं अलाउड ही नहीं है, मैंने रख लेना है. ठीक. Silent रखो, ठीक है? उसके बाद BCD. मैं आज तक ये मेरा strongest one कि जब भी किसी को छोड़ रहे हो, your every meeting is not supposed to be a sale. Your every meeting is not supposed to be a conversion. Your every meeting or call is seeding for the next. And किस चीज को सीड करना है? 3 चीजों को. वही 3 चीजों को जो मैंने शुरू में बताया. You have to find a way to build more trust. You have to find a way to build more credibility. You have to find a way to build more authority. But how do you see? उसको अब आपने रिजल्ट दिखाना है. रिजल्ट के बारे में कुछ छोड़ देना उसके पास, जिसे कहते हैं you seed something. कैसे? आपके कंपटीशन का ऐसा अच्छा हुआ था, क्या हो रहा है. That FOMO is the best seed. Other seeds, people in your industry, if they don't deploy a CRM, what you were talking about, people have lost, lakhs under the table, which they never realized. काम में जानना है. अभी आज का देखो,
कहीं डाउट डालो। डाउट क्या डालो? एक होप में डाल दिया, क्योंकि उसको जब तक आपने वो ड्रीम दिखाई नहीं, जब तक वो रिजल्ट्स और बेनिफिट की बात नहीं की, आपने सीड नहीं किया। एंड यू हैव टू सीड देम एवरी टाइम यू मीट देम। So this is every time you meet, don't leave the meeting until you have seeded. Can we understand that? Okay, every meeting has to end with some seeding. Otherwise, it is dead. आप कहते हैं ना कि खत्म कैसे होगी कन्वर्सेशन? कि या वो चले गया, उसने वो खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, क्योंकि आपने सीड लिया। आपने नेक्स्ट के लिए कोई बूटा ही नहीं बोया, तो आपको नेक्स्ट मिलेगा नहीं। And there are sales cycles. So what we have to realize is, sales in every field is never the first meeting or the second meeting कि आपने decide कर लिया इसी पे close होगा। नहीं, अभी trust नहीं करना, अभी credibility नहीं बनी, अभी authority नहीं बनी, उसके लिए सीट का किसी का sales cycle, like and where is in the field, let's say IT services, this sales cycle can vary from 45 days to 180 days sometimes, or sometimes even longer, right? You would have people who will come back to you after a year, 2 years sometimes. Sales cycle for, let's say you're doing insurance, right? Insurance it can be much shorter, because it might be he needs it right now. But किसी के फोन में अगर इन्होंने ऐड करवा दिया कि trusted insurance advisor is Kashmiri, right? वो जब अपना फोन नेक्स्ट देखेगा, वो ट्रस्ट से ही कॉल करेगा। So seeding, नेक्स्ट भी तो आना है, एक ही बारी में थोड़ा हलाल कर देंगे, right? हम लोग ये करें, चलो जी आज काट देते हैं इसको, कोई फायदा कुछ नहीं आता। So we always have to be seeding. Then we will always remember from today that sales is not selling. Sales is creating a buying environment. Agree, disagree? Agree. Why do you agree? Let them decide to buy whenever you want to. Make an environment to. Okay. When you're creating an environment, you are doing multiple things, not just one thing. Remember touch points. कोई भी whenever they are buying from you, they are never interacting with only you. Whenever somebody is buying from you, they are never interacting with only you. They are interacting with all the possible touch points you have left. And they are making up their minds. Sometimes even before coming to a meeting with you, they are already either convinced or they are closed. They are like already closed. They are not going to open till you have the know-how to make them trust you. So जो भी इस पोजीशन में already आ गया, वो पहले आपको भी ट्रस्ट नहीं करता, वो पहले ना करने आया, या आपका खुद देखने आया था इसके पास क्या है। पर जो भी एक आपके बाइंग एनवायरनमेंट से आया है, वो suddenly आपको already they are coming with the feeling that this might be the right person, and then it is your fitting, the fitting of each other. So the idea is never we cannot be thinking of sales as selling. Sales is always creating those buying environments. Touch points का सोचो, ये हमारी customer की journey. In fact, I'm going to spend the next 6 months wireframing and working on UI, UX and CX. क्या? Framing those customer touch points and journeys. मैं उसको tech की तरफ लेके जा रहा हूँ. But ये actually सबसे important. हम सब ये realize करेंगे किसी का अगर restaurant भी है, and I was talking to somebody with a restaurant, and she said the same thing. She says, I want you to help me, understand the touch points my customer has with my business, and that is also creating a buying environment. You see, everything that we are thinking is about not selling, but how we create those buying environments. Let's move forward. So let's read. So, number 1, we will not think of us self-centered से ज़्यादा serve करना.
सर्व ये बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी करना because we have this reputation of sales that a person who's into sales is supposed to be gregarious, extrovert. Untrue. The best thing is because हमें YouTube से knowledge मिल रही है, हमें दिखाया जाता है कि वो sales है, actually वो sales नहीं है. A sales person is a guide, a consultant, somebody who can again change management. जो वो properly guide कर सकता है, वो better sell करेगा. So हमेशा हमें सोचना है कि हमें serve करना है. A guide first, hero कोई और है हमारी पिक्चर. हम वो हीरो को जो वो एडवाइस देने के लिए चाचा चाची है और वो आते हैं ना हम वो लोग हैं. हम एक्चुअली हम लोग सोच लग जाते हैं हम हीरो हमारा कस्टमर. We are supposed to guide them. हीरो को लड़की नहीं मिल रही, प्रॉब्लम आती है, बीच में गुंडे आ गए हैं, उसको बताना होता है तुम ऐसे ये कर ले तेरा ठीक हो जाएगा. हीरो जाके उसको मारता है, हीरो करता है सब कुछ, और हम उसे गाइड करते हैं. एंड हमें वो गाइड ही देना है. हमें हर पिक्चर का हीरो नहीं बन जाए. पिक्चर का हीरो हमारा कस्टमर है और सर्व करना. सेकंड, हमें हर टाइम एडवाइस नहीं करते रहना जैसे हमें सब कुछ आता है. नहीं नहीं ये ठीक है आप करें, बिकॉज हमें वो बेचता है तो हम उसको एडवाइस कन्विंस जैसे करने लगते हैं. पूछो, उससे पहले पूछो तो सही उसका चैलेंज क्या है. व्हाट इज देयर करंट स्टेट और डू दे इवन नो देयर डिजायर्ड स्टेट, desired future state. And the moment we are able to ask, everything lies in those same ask. There are two elements of this. Ask के बाद क्या आता है? Listen. If you are not listening to what they are saying and you are not making it a sequitur किसी को meaning पता है? Anybody? Very good English? Sequitur actually means that it is a follow-up to the next. That means if they have answered, let's say I ask somebody, financial advisory, okay, what is your goal for the next 5 years? And somebody has said, I'm thinking about the education of my child. And क्योंकि आपने pre-plan किए हुए अपने answers, आप next question पूछोगे, ठीक है, retirement का क्या करोगे? And suddenly, I'm off. I've already, this is not secret. The follow-up question would have been, oh, how old is your child? You see, we cannot frame and have a fixed set of questions because we are not listening. Ask का मतलब है पूछना the right questions. Challenges क्या? I've told you. उसका एक करंट स्टेट है, उसका एक डिजायर्ड स्टेट है, एंड उसको कोई ऑब्स्टिकल है बीच में, वही तो ढूंढना है. वो ढूंढ लिया, सेल हो गई. If you can guide them how to get from here to here, and you've given the right value proposition, value price, सब कुछ मैं वही कवर कर रहा हूँ. Imagine you've actually made the sale already. Because हम लोग सुनते ही नहीं हैं, हम लोग एडवाइस करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हमें पता है. And वही सबसे बड़ी बात. सुनो तो सही उसको क्या चाहिए, and हमेशा अपने solution को. Even if you have a fixed product, you try to customize the result and benefit in such a way that it matches what they want. That is the art of sales. The same. Anji? Customer का time waste हो गया आपका. सर बड़ा कुछ फिर बदलना पड़ेगा हमें. हमारा टाइम का भी वेस्ट नहीं होगा. जितना टाइम आपको, आप लकी हैं, आपके पास इतना काम है कि there are people you are wasting time you think talking to people, but I promise you that the more time you spend with people is going to get you more business forever than the time you spend thinking कि वो हमारा टाइम वेस्ट है. कोई भी किसी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा. ये हमारी सोच है, हमारा माइंडसेट. एंड हमें माइंडसेट हमेशा बदलना है, क्योंकि वो सर्व करना है, आस्क करना है, लिसन करना है, एम्पैथाइज करना है. वो क्यों आपका टाइम वेस्ट करेगा अगर वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बातें कर रहा है? दैट मींस उसको कुछ ना कुछ चाहिए.
थोड़ा एम्पैथी तो दिखाओ, थोड़ा केयर तो दिखाओ कि उसको क्या चाहिए, वो क्या सोच रहा है, why is he or she is actually stuck. And I can talk about any industry. They are stuck somewhere. Why are they stuck? And if we find that, we have now the way to crack to the last part, which is selling. Selling is actually, जिसे कहते हैं ना, बातें हो गई, उस सारे को रिपीट करना, उसकी भाषा में, and summarize करते हैं. If they use the word, मुझे प्रॉब्लम है, तो आप बोलेंगे प्रॉब्लम. अगर वो बोल रहे हैं मुझे फटीग है, तो आप वर्ड यूज करेंगे फटीग, not tired. You get my point? Sales psychology. When you are summarizing, that means तब आपने सुना है, तब आप भी questions पूछ रहे हैं. When you are able to get exactly, you can summarize that entire conversation, starting from serve mentality to asking to listening, empathizing with their situation, क्यों, care about them, and then summarize. That is bringing it all together. We must always understand the sequence. It does not change, guys. You can be the best expert. You can say, I'm very good at closing. I can tell you then you are not still good at sales. Because that is your belief system. And I'm saying half, like 80% of the work is done for a salesperson, is done outside of his environment, which is the buying environment. सारी दुनिया, सारी टीम लगी हुई है आपकी वो रेपुटेशन में. अगर आप सिंगल पर्सन बिजनेस है, तब आप कह सकते हैं मेरे बाकी सारे एफर्ट्स, सारे काम आते हैं, and then I'm able to sell. If आपकी रेपुटेशन नहीं बनी हुई है, ट्रस्ट, credibility, authority नहीं बना हुआ है, then it becomes difficult. So I'm going to go into the tech of it. I'm going to go into, when we make it easy to buy, we have to, now go into the science. And please, ये आपको हमेशा के लिए काम आएगा. जो भी इसको formula को लेके जाएगा, I promise, if you start working on this formula, you will change your sales forever. Okay? I'm going to give you the formula in the next slide, but let's understand this. Science में जा रहे हैं, so let's go into it. Okay. What we want to understand is dream outcome. ये ज़्यादा से ज़्यादा. Okay. Second है higher perceived likelihood of success. ये दोनों हैं ज़्यादा जरूरी. Okay. इसलिए मैं साइंस में जाने वाला. इसके फॉर्मूला को मैं समझाऊंगा, and then I'll open it up for a few questions ताकि ये भूले ना इक्वेशन. ये क्योंकि यही बहुत इम्पोर्टेंट है. इसी से सब कुछ मैंने बदला. Right? The third, second point, lower perceived effort and sacrifice. And उसके बाद lower perceived risk and time delay. अभी थोड़ा complicated लग रहा है, मैं इसको अभी इस साइंस को समझाने लगा. Okay? Next 3 slides are all about value creation. This is sales, guys. This is how do you build your entire marketing system for your company. So, if you're already selling way bigger dream, isn't it that when you're Let's understand the formula, then you'll get your answer. Okay? Dream में भी है. So, guys, this is the number 1 formula for marketing and sales, which is value. बोल रहे थे ना value कैसे बढ़ानी? अभी हम उसकी साइंस में जा रहे हैं. जब तक हम इसको actually scientifically पकड़ते हैं, हमें ये कभी भी हम create नहीं करते. So every time you're making an offer, you go back to this formula. And how we are going to do it is dream outcome. Okay, I've taken the bigger outcome. First, I'm saying dream outcome, perceived likelihood of achievement of that dream outcome. Perceived. The golden word is perceived. Perceptions पे चल रही है सारी चीजें. उसको divide कर रहे हैं हम risk
और टाइम डिले से, और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है एफर्ट एंड सैक्रिफाइस। इसका कोई मोटा मोटा अगर मतलब समझ रहा है कि ये है, इसको ध्यान से रखो कि जो पहले दो हैं वो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जो दूसरे दो हैं, ठीक है, वो वैल्यू, फिर से देखते हैं इसको, लेट्स लुक एट इट अगेन, यहां से देखो। सो उसको अपना एफर्ट और सैक्रिफाइस और रिस्क कम करना, टाइम डिले कम करना, और उसको अपनी वैल्यू ड्रीम आउटकम से बढ़ानी है, और उसको परसीव, उसकी परसेप्शन होती है, परसेप्शन को उसको ठीक करना है ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट। दैट मीन्स हाउ विल इट इंप्रूव देयर लाइफ, how will it change management is dream outcome. How likely is it to happen? This is your entire trust statement. Now when Advait goes to someone and he says, I will, I will engineer a software for you, or I will, for your business process, I'm going to make a software which is a solution for your business, right? अभी मैं कह रहा हूं ओके, उससे क्या होगा, ठीक है, उससे आपके जितने ये सारे प्रोसेसेस में आप पढ़े हुए हैं जिसमें आपकी एफिशिएंसी है, इट शुड इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 60% व्हेन यू ऑटोमेट इट, राइट? ओके, देन मेरे को ये मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा वो मैं भी उस पे नहीं आया, मेरे को मिलने के बाद उसके दिमाग में है कि चलेगा नहीं चलेगा। सो Advait हैज टू इंक्रीज द परसेप्शन that the likelihood of this to succeed is very high. That means likelihood of achievement is very high. समझ रहे हो? उसके बाद कितना टाइम लगेगा, उसका रिस्क क्या है, उसका पैसा लगेगा, रिस्क कैसे absorb, how do you manage the equation of risk, उसका जो रिस्क लग रहा है, उसका जो पैसा लग रहा है versus the value he is getting, versus the outcome and the likely achievement, how low can we keep the risk to them? That means बनेगा ही बनेगा 6 महीने में, टाइम डिले विद रिस्क, 6 months में आप कमिटमेंट करते हैं ऐसे की, एंड उसके बाद एफर्ट कितना लगेगा, और उसके एंड से व्हाट इज ही सैक्रिफाइसिंग, क्या उसके करंट ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या वो उसके जो करंट जो चीज चल रही है कुछ और हिलेगा, या उसका जो है काम उसका तो नहीं लगता। लेट्स से किसी ने बोला कि आई बिल्ड वीडियोस फॉर यू, लेट्स से देयर इज अ वीडियो क्रिएटर फॉर यू, राइट? वही है, देयर यू, ठीक है, करण जी कहते हैं आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू, एंड सडनली वो कहते हैं ओके, करण जी का एग्जांपल, राइट? ड्रीम आउटकम क्या हुआ, आई विल मेक अ ग्रेट, लेट्स मेक अ कॉर्पोरेट वीडियो, ठीक है, अभी कॉर्पोरेट वीडियो, I'll make a great corporate video for you, right? Although he does YouTube and thought leadership videos, right? But second is how likely are you to deliver that? आपने कहा ले देखो जी, ये मैंने काम किया हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें मेरा टिपिकली इतना टाइम, तो मैं आपके 1 महीने में बना दूंगा, ठीक है? अब वो कहेगा अच्छा इसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, मेरा टाइम क्या लगेगा, करण सडनली कह दे नहीं जी इसमें आपको ना 6 घंटे का शूट करना है, एंड आपका ना थोड़ी देर के लिए हम रोकेंगे, एंड हम जैसे जैसे आपको गाइड करेंगे वो शूट्स के लिए हम 1-2 दिन आएंगे आपके, एंड हम लोग वो सडनली सोचने लगेगा अच्छा मेरा काम तो नहीं रुक जाएगा, मेरी प्रोडक्शन चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, हाउ डज इट इफेक्ट माय वर्क, एंड सडनली दे विल स्टार्ट थिंकिंग okay what is the time decay, can I use AI, can I use something, images from somewhere else, अभी जुगाड़ पे चलने लगा, but suddenly if he शुरू में if he has pitched in such a way that he says you will get the best corporate video for your business which will have the potential of increasing your visibility and your brand's trust, credibility and authority, and it will be done in 1 month, तो मैंने वो ऊपर वाला क्लियर कर दिया, at the shortest
possible effort of yours and sacrifice of yours. That means आपकी टीम को हम तंग नहीं करेंगे, हम अपने आप शूट करके चले जाएंगे. आपका मैक्सिमम हम लोग एक बाइट लेंगे जो आप जब भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा हम लोग उसको कर देंगे. And we keep the cost very competitive. But because we are giving you world standard, we keep the cost, of value and price to your favor. Is it a better likelihood of him getting work when he's removed the risk, removed the time decay, removed the effort, removed the sacrifice? जब हम वही 5 चीजों पे आ रहे हैं जिससे आपसे लोग खरीदते हैं. किसी को ये फॉर्मूला समझ आया? कोई एक केस स्टडी लेते हैं आपके बिजनेस के लिए. नहीं, you understood the formula, but anybody wants to put the formula at use within their business? Anybody? You want to go for it? Okay, what's your business? So we are into HR consulting and tech. Okay, so how are you going to use the formula? So usually also whenever I have meeting with my clients, I try to know their pain points. So basically, Let's put whatever we're saying, let's put it there in the formula. Dream outcome क्या है आपके customers के लिए? the nice service, right? Yeah. Introduce yourself. Hi everybody, this is Amrjot, I'm founder of Untitled Corporate Services. It's been 9+ years we are in industry trying to help our clients with retain their older employees along with hiring new one. So coming back to the formula, my dream outcome would be our clients' dream outcome would be having at least 90% of the retention rate along with having right people at right time. So हमारा जो risk है Yeah. वो है 90% retention rate. To achieve that, To yes. achieve that, Yeah. उसको risk है, अगर उससे कम होता है उसका risk हमें कम रखना है. Exactly. Perceived likelihood of achievement क्या है? Uh, Dream outcome समझ आ गया. हाँ. You provide them candidates. yes. How likely are you to provide them candidates? How will you counter that question? So we will show them the success story related to their हम industry. credibility बना रहे हैं. हम credibility कैसे बनाएंगे? Testimonials, past work. ये मैंने किया हुआ है, ये देखो मेरे को ये मिला हुआ है, ये कैसे उसका perceived likelihood उसी से बनेगा ना? Yes. कैसे हम अपनी credibility बढ़ा रहे हैं, right? And उससे उसका perceived likelihood बढ़ जाएगा कि yes you will be able to do it because you've done it for 100 other clients, correct? Yeah. Perceived likelihood बढ़ गया, risk कैसे कम करोगे? With understanding their gaps. So You will give an assurance. yes, with the time frame. And you will say that I will provide you a candidate in, let's say, 2 months. right? इतना होता नहीं Like, otherwise. let's say हम कहते हैं 2 months. Okay का बहुत ज़्यादा है. ठीक है? Yes. Okay. For most of our clients, we do it in 15 days to Exactly. 30 days. Yes. It is a range. Yeah. The moment I use a range, is it a better statement than a fixed date? 100 times better. 100 times better. So how do we reduce the risk? We do not give assurances which are not achievable, which are too good to be true. I guess It should be overcommitting- realistic. Yes. Realistic, उसको समझ आया, उसका risk and time delay किया, अब उसका effort and sacrifice कैसे कम करोगे? उसका क्या effort लगेगा? कम कैसे करोगे? Time duration you are talking about. Think your business. आपका outcome आप दे रहे हो, perceived likelihood, उसका effort and sacrifice कैसे कम करोगे? With giving them screened candidates who are immediate job. There you go. आपने effort किया, उसको pre-screen candidate किए कि उसका जो time है लगना, उसका जो effort लगना है आपने कम कर दिया, and you then become an expert for them. Isn't it a solution? And if you can now articulate your services and your offers to cover these points, isn't it a better value offer? Isn't it a better value addition for somebody? Isn't it the perfect marketing pitch for your business? Exactly. When you can talk about results and outcomes, thanks a lot. Thank you. Well done, let's hear it for her. When we can,
talk about results and benefits, amplify them. When we can assure them through credibility that there is a very high perceived likelihood of them achieving that result and that benefit, they will. When we amplify that and we reduce their effort, their sacrifice, their risk, their resources, their time taken, you've got a magic formula to create any value proposition. That means your entire marketing, which leads to sales, is hinging on this, which is value. It all starts here, and this is where you start building. So the first to create value, the last to destroy the value. So we have to keep the risk as low as possible. We have to keep the time decay low, the effort low for them. वरना हमारे को कैसे उठेगा? हमारा प्रोडक्ट काम ही नहीं करता उसके लिए। कोई वो पिक्चर आई थी ना 3 Idiots, उसमें क्या वो there was this famous dialogue, explain a machine. What is a machine? And Amir Khan got up and said, it's something that reduces human effort. And that is the crux of it actually. Humans are lazy. Humans, उनको जब चैलेंज आता है तब वो बड़ा कुछ फड़फड़ाते हैं, बट अदरवाइज उनको थोड़ा सा उनको हमेशा काम उनको चाहिए बना बनाया, जल्दी मिल जाए, बेस्ट मिल जाए, कम से कम टाइम में मिल जाए, बट लाइवलीहुड ऑफ अचीवमेंट हमेशा परसेप्शंस होती है। सो फॉर्मूला मजा आया, सबने नोट किया? लेट्स मूव अहेड गाइस। Most of products and services, they focus on the top two. सारी ही मार्केटिंग यहाँ पर चलती है कि हम ये दे देंगे आपको, ये ड्रीम आउटकम, ये दे देंगे, हम इसी पे फोकस करते हैं। उसके साथ अब ये जोड़ने लग जाओ, उसका रिस्क हटाओ, उसका जो मैंने बोला ना उसको ऑब्स्टिकल है। क्या हमारे पहले वाले फॉर्मूला में क्या था? डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचने के लिए, डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट, उसके ऑब्स्टिकल्स है। जब आप वो ऑब्स्टिकल्स हटा दोगे, you have made the perfect value proposition, value offer, and that is the magic of sales actually. This is the buying environment. Buying environment comes and starts here. So, how do we close? Abhi sab bana liya. How do we actually close? How do we actually structure a close? Let's go to it. Number one, अब हमारे पास फॉर्मूला है, उससे हम उससे मीटिंग तक ले गए, अब हमें क्लोज कर। अभी यहाँ सबसे बड़ी सबको यही प्रॉब्लम, सबको पता बताया चाहिए। हमारे पास क्लाइंट आए, वो हमें बोले देखो ये चाहिए, हमने ये दिया, चलो जी। वो ना सब लोग गले पे बैठे समय ट्रेडिशनल बिजनेस कि मेरे पास ये फोन है बेचने के लिए, वैसे किसी को चाहिए, you know, so ये फोन है बेचने के लिए, ये 100 रुपए का है, लेना है लो, नहीं लेना जाओ, you know, and वो हमारा माइंडसेट बदलता ही है। We expect our meeting में we don't want to serve, we don't want to ask, we don't want to listen, we don't empathize, and we don't summarize. That's what I was talking about, and we're talking sales over here. That means we have to understand how do you structure a call. अभी वो सारा वैल्यू प्रोपोजिशन बना दिया, वही माइंडसेट पे आप तक आ गया। आप कैसे करो? आगे भी तो बढ़ना, सेल्स तो करनी है, और सेल्स करने के लिए we have to set clear expectations. Expectations क्या है? शुरू में ही क्यों मिले हैं? Background, always connect the dots. Sequitur, word use किया था? Everything leads up to something. अगर वो आपसे पढ़ के आया है कि आप उसको कंसल्टेशन कॉल देंगे, लिखा आपने, it's a consultation call with you, okay? Then you have to set the expectations for that consultation. How long is it going to take? What are basic things that you are going to discuss? You must set the clear expectations. Related to this, Yes, or you are going to give me your opinion? no, I want to ask one thing related to
इसी से पूछना वरना ओपिनियन ना देना नहीं, ठीक है हाँ So I just want to know because you're talking about setting up the expectations. उसको already पता they are aware before you arrive. I have a meeting. So there is a concept of zero barrier. Do you think is it relevant to this and that is really important to set up the expectations and narrow down their never set the expectations you misunderstand that's why you asked that question never set the expectations के results ही शुरू में ही बता दिए वो expectations की बात नहीं कर रहा when I say clear expectations is connecting the last dot from where they came from to that meeting the pre-sales कि इसलिए हम मिल रहे हैं बस वो expectations है कि इसलिए हम मिल रहे हैं जैसे कि अब इसको टोटल ले जो डॉक्टर है उसके पास पेशेंट आया हम मिल रहे हैं कि आपको पॉसिबली आपकी टांग में दर्द है I am going to spend time ask you a few questions and see where the pain is correct and hopefully once we are done with it I should be having a solution for you I am not pitching anything in the expectations don't pitch please because अभी क्वेश्चन तो पूछे डायग्नोस तो किया नहीं बातें तो की नहीं आस्क तो किया नहीं लिसन तो किया नहीं सर्व तो किया नहीं तो कैसे होएगा तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सबकी हमने सबने जो बड़े हो जाते हैं वो बिजनेस एनालिस्ट रखे होते हैं सेल्स वाले रखे होते हैं एंड नाउ द बैड न्यूज़ एंड द गुड न्यूज़ once an entrepreneur once a business owner you have three main things that you have to focus on cash flow delivery which is again operations ho sakte hain right delivery is operations and third is sales turns into revenue when you are rich like Abhay he's got other revenue streams but he would be doing injustice to himself and his company when he lets go of those three elements. He has to always keep an eye on cash flows. He has to always keep an eye if delivery ठीक है, operations ठीक है, तभी delivery ठीक होगी. Delivery मतलब आपने project कैसे deliver कर रहे हो, जो भी project आ रहा है, जो भी product आ रहा है, जो भी सबके लिए मैंने delivery word use करते हैं. क्योंकि delivery जितनी अच्छी होगी, उतना ही chance और लोगों को वो refer करेगा और काम आएगा. और डिलीवरी अच्छी नहीं होगी वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है तो बहुत लोग सेल्स पे फोकस करके डिलीवरी छोड़ देते हैं बट सेल्स से ये दोनों चीजें चलती हैं तो सेल्स हमारा नंबर 1 हमारे नाक के नीचे होना चाहिए वी शुड बी एट ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स एज बिग एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन बी आई हैव सीन billionaires doing one thing in they're always trying to pitch sell subtle way of selling, but they are also always selling because that is how important it is for you to realize कि किसी को hire करके नहीं होना है ये वाला part you should be very good at you should be the number 1 consultant in your company you should be the number 1 business analyst in your company you should be the one who is able to bridge that gap एक gap bridge क्या होता है customer को क्या चाहिए हम क्या देते हैं उसका जो ब्रिज है वो ही सेल्स है एंड ये हर एंटरप्रेन्योर को आना चाहिए और मोस्टली आता है मैं उसी को आसान करता हूं सो यू ऑलवेज हैव टू आस्क क्वेश्चंस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर रियल पेन डोंट अज्यूम थिंग्स कि उसको तो यही चाहिए होगा ऐप बनाने आया ऐप ही चाहिए अभी पूछो क्यों चाहिए ऐप अभी पूछो what is it that he wants that app to do why is he making it so that you can guide him कि maybe उसको actually कुछ और थोड़ा सा चाहिए हो कुछ साइड पे चाहिए हो गाइड तो करो सुनो तो सही उसको क्या चाहिए right we are so used to you know वही मैंने कहा ना गले पे बैठे हैं कि हम भूल जाते हैं बातें करना सर आप रेंटू आपने तो कह दिया टाइम वेस्ट होगा ठीक है but I know you sell very well. You know, I know that. But you have to elevate yourself from that position. You are a guide to people. And you must now
एम्पलीफाई द पेन। दर्द जब पता लग जाए तो थोड़ा दर्द और बढ़ा दो। सेल्स करनी है तो थोड़ा दर्द तो होना पड़ेगा। That means if they have a challenge, आपको दुखती रग पे वो थोड़ी सी उंगली तो रखनी है। अगर उसको कोई चैलेंज है तो प्लीज उसको पेन को एम्पलीफाई करो। दैट इज सेल्स। अगर वो कहता है कि फॉर एग्जांपल एनी बिजनेस, गिव मी एन एग्जांपल। मेरा कस्टमर नहीं आ रहा, कम आ रहा है। कौन सा? दुकानदार नहीं अभी हम मीटिंग में कस्टमर के साथ में मीटिंग कर रहे हैं। उसी पे कस्टमर हाँ जी। फिजिकल ह्यूमिलेशन एंड मजाक उड़ाना अलाउड नहीं है, वो भी स्पीकर का मैम। मतलब सीधा ही आपने अटैक कर दिया। आप हेड सर्विसेज देती हैं? फेयर इनफ मैम, जो पिचिंग करनी है दैट इज फेयर, बट वो ना, हाँ ठीक है। अभी आप मेरे साथ मीटिंग में हैं, ठीक है। अब आप मेरे को एम्पलीफाई कर रहे हैं मेरी पेन को कि आप ठीक कर सकते हैं। आप इसको ठीक कर सकते हैं। और मैं कॉस्मेटिक बिजनेस में हूँ, तो आई गॉट अ प्रोडक्ट व्हिच आर 100% केमिकल फ्री, और उसको आप अगर यूज करेंगे So basically what she's saying is कि जो भी कोई दुखी हो उसको थोड़ा सा और पिच करो मैम। मैं ही अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब तो पंगा ले लिया, बोलो मेरे पे अटैक कर दिया, शाबाश। So जिसने नोटिस नहीं भी करना था सारे मेरी गलती कर लो, मेरी रिकॉर्ड कर लो। I'm very sorry, but this was not this. So now the point is, she is absolutely right. So if she is selling that, if she is, and I would have gone for a consultation, she would have said something which puts दुखती रग पे थोड़ा सा और दर्द हो कि सारी पर्सनैलिटी आपकी सारी पर्सनैलिटी वो खत्म हो जाती है जब आपके बाल झड़ जाते हैं या कोई आपको एंड थोड़ा सा और कह सकते थे कि वाइफ के साथ जब चलते हैं तो लोग कुछ ऐसे तो नहीं देखते, either ways but that is the right way. Actually that is the right way because it does amplify and उसके बाद वो जो आपने एंड में किया, मेरे पास ऑर्गेनिक है, ये है सॉल्यूशन है, it could have been even better. How would you make that better is prescribing not just your service. Again आपने commodity बताया। Again उन्होंने कहा मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है और क्या है? अभी प्रोडक्ट की बात करें। मेरे को उन्होंने कोई वो ड्रीम आउटकम बोलना चाहिए। So the idea is that she should have actually started saying that what if, अब होता है what if, इसे कहते हैं dream and results. What if I told you likelihood perception, मैंने आपको value formula दिया. What if I told you that in the next 6 months you could have a full head of hair as you were 10 years ago without any risk of chemicals, sacrifice, without any extra effort on your end, without any physical surgery, risk, sacrifice, time decay, आप समझ रहे हैं? And वो ही अब आप ही की वो same language, it becomes more beautiful, it becomes more valuable, becomes more value creation rather than pitching a product. मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है, ये नहीं। What if? अब मेरे को सपना क्या? ठीक है?
what if you could have the hair that you had 10 years ago? You know, and that would have been a better connect with the problem once you amplify. Did you get that point? Right? So the idea is then there are two things missing. What are two things missing? जब prescribe कर दिया हमने. Anybody? Two things missing क्या है? One is close. Close करना है उसको. Close कैसे करते हैं? Call to action. मैंने बताया है, पहले बताया है. Close कैसे करते हैं? समाधान हो गया. Seeding, summarizing with one more element. वो क्या होता है? जो सबको सीखना है. Seeding हो गया. अभी seeding अगर वो नहीं दे रहा है, अगर ले ही रहा है, तो उसका लेने में एक चीज रह गई है. वो होते हैं objections. वो होते हैं objections. जिस इंसान को, जिस बिजनेस को अपने कस्टमर्स के टॉप 5 ऑब्जेक्शंस नहीं पता, उनको अपना बिजनेस नहीं पता. करोड़पति बिजनेसेस, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉप 5 ऑब्जेक्शंस ऑफ योर कस्टमर, possible objections also, you've not really understood, you've let other people sell for you. आपका चल गया because आपकी टाइमिंग ठीक थी, बट अभी तक आपने असली अपना स्केल पकड़ा नहीं, आपने असली मार्केटिंग पकड़ी नहीं, आपने अभी असली सेल्स अपना स्केल एक्चुअली पकड़ा ही नहीं. Because the day you start understanding what are the top objections, you will start building solutions to overcome those objections, and every subsequent meeting, call after seeding you will have will be always ये मेरे को objection आता है, इसको ऐसे handle करना है, इसको ऐसे, या फिर मैं अपने आप को ऐसे better करके इसको reframe, क्योंकि ये objection है. And the day we start thinking about the customer and their objections, main objections, then we've actually completed that value statement, and then we can actually sell. Selling, ये सारा अब मैंने इतनी अच्छी तरह आर्टिकुलेट कर दिया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप, बट ऑब्जेक्शंस ये हमें सबसे ज्यादा तंग करते हैं. सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शंस कई बारी प्राइस की होती है. क्या क्या ऑब्जेक्शंस होती हैं? प्राइस की, वही सेम चीज होती है, जो perceived likelihood of success, उसको डाउट है आप पे, उसको रिस्क ज्यादा लग रहा है, उसको सैक्रिफाइस ज्यादा लग रहा है, उसको एफर्ट ज्यादा लग रहा है, तो वो उसको ऑब्जेक्शन है. एंड ऑब्जेक्शन अगर जब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप एक्चुअली एंड में अपना कभी भी पूरे पोटेंशियल में आप बेच नहीं रहे. बिकॉज सो मेनी बिजनेसेस स्लिप आउट ऑफ, you could have closed them, but they slip out, and they lie somewhere in your CRM or your sheets as a number or a name, because you did not handle the process well. You did not handle the handling of objections well. You did not understand your customer well. And आप सोचते हो मेरी सेल चलेगी, आपको एक्चुअली उस पर काम करना होता है, आपको एक्चुअली समझना होता है. सो आप अपनी टीम्स के साथ या अपने आप, individuals हैं अपने आप, you need to think of these things. You need to think of what has been talked about today. And unfortunately इतनी सारी बातें सेल्स की, and सेल्स से बड़ा क्या है? सब एग्री करते हैं? क्यों? That's correct. That's correct. But buying environment, marketing. Marketing में आपके ब्रांड की स्टोरी है, आपके ब्रांड की पोजीशनिंग है, आपके ब्रांड की मैसेजिंग है, आपके ब्रांड की उसी मैसेजिंग, पोजीशनिंग, स्टोरी की डिस्ट्रीब्यूशन है. और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि you will be surprised
that it amplifies your sales by 900%. That's the math that came. कि जो मार्केटिंग पे फोकस करने लग जाते हैं उनकी सेल्स एम्प्लीफाई हो जाती है एंड तभी हमेशा मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ी है सो मार्केटिंग डिजायर्स पे की जाती है या रिजल्ट्स एंड बेनिफिट्स पे नॉट ऑन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मार्केटिंग जो है वैल्यू पे बनाई जाती है ऑफर देने पड़ते हैं जो हम वैल्यू की फॉर्मूला हमने सीखा था वो एक्चुअली इसके लिए सीखा जो वैल्यू क्रिएशन का ऑफर था वो ऑफर क्रिएशन फॉर्मूला इट वाज फॉर दिस मेक बेटर ऑफर्स नॉट बेटर प्रोडक्ट्स और लाउडर नॉइज प्रोडक्ट्स तो अपने आप अच्छे होते रहेंगे अगर आपने समझ लिया ऑब्जेक्शंस क्या आती डिलीवरी क्यों नहीं अच्छी हो रही और उसको धीरे धीरे ठीक करते कोई भी परफेक्ट नहीं है हम भी नहीं बट वो धीरे धीरे जब आप इंक्रीमेंटली ठीक करने लग जाते हैं कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के इट गेट्स बेटर यू गेट बेटर एट डिलीवरी सो नो नॉइज बेटर ऑफर्स अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू हैव अ मल्टी चैनल अप्रोच वो जमाने खत्म हो गए कि एक ही प्लेटफॉर्म से हमारे को धंधा आ रहा है एंड हमें आ रहा है तो हम खुश हैं खत्म हो गया वो जमाना अगर आप अभी भी इफ यू आर स्टिल इन दैट माइंडसेट यहाँ से मेरा अच्छा आ रहा है चल रहा है whatever got you here will never get you there you will stagnate you will suffer कभी ना कभी कुछ होएगा जब वो एक जो चैनल है वो आपको तंग करने लग जाएगा और फिर आप फड़फड़ाएंगे फिर आप रैंडमली चीजें ट्राई करेंगे इंस्टेड उसको सिस्टमैटिकली उसको समझ लो एंड आज मैं बताने वाला हूँ मैं ये मल्टी चैनल भी आपको बताने वाला हूँ which sets you off on your sales engines but the idea is start focusing on what is new क्यों बोल रहा हूँ that's the best word people want to hear right repackaging or whatever you're doing in a way which sounds fresh fast and certain वही सेम चीज है वैल्यू फॉर्मूला था फास्ट जब मैं बोलता हूँ मैं रिस्क कम कर रहा हूँ मैं टाइम डिके कम कर रहा हूँ जब मैं सर्टन बोलता हूँ मैं वो जो परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ सक्सेस उसको बढ़ा रहा हूँ मैं जो उसको लगता है सैक्रिफाइस एफर्ट उसको कम कर रहा हूँ हमेशा वही इक्वेशन एंड यू विल रियलाइज what got you here will not get you there one golden rule of marketing know your audience so I'm going to do a very quick क्योंकि मैं पानी पीने लगा हूँ so मैं बड़ी जल्दी आपसे पूछूंगा ठीक है कि आपका कस्टमर कौन है and I really want to know and I'll start here मैं पानी पीने जा रहा हूँ तब तक आप ही खाएं आपका कस्टमर कौन है So my customers are students. How old? All right, so let's go this way. So my customers are educational consultants who actually. अभी तो class students हैं. Yeah. So let's go with the other one. So my customer is educational consultant who consults students. Fair enough. Where are these education consultants? These educational consultants are everywhere. They help in stream, career selection. They help Everywhere. No criticisms. Okay? I'm absolutely a zero mean person. But मैं गाइड हमेशा ठीक करता हूँ क्योंकि दिल से करता हूँ हमने जब भी whenever we think this is very important guys because there are three elements that you have to nail whenever you now think of your customer the demographics
the firmographics if you are P2P, and the psychographics. इसको थोड़ा सा समझते हैं कि हमें पता होना चाहिए मेरा कस्टमर क्या करता है, उसका क्या टाइटल हो सकता है, कौन से रीजन में है, मेल है फीमेल है, ये भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट बना के। मोस्टली यहाँ पर सर्विस कंपनी है, जितना मेरा आइडिया है, मैंने सबसे पूछा था, मोस्टली सर्विस कंपनी। सो लेट्स थिंक कि उसके वो डिसीजन मेकर है। अब इसको चेंज करते हैं। You cannot just talk to an education consultant who works with a certain company. Maybe you need independent business owners, right? Change हुआ। उसके बाद उसकी एक certain age होगी। वो इतने साइज का काम करता होगा या उसके पास एटलीस्ट मतलब 50 बच्चों को कंसल्ट करता होगा। 2 बच्चों का भी स्टार्ट किया है तो maybe वो भी नहीं आता। फिर वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन का होगा। आपने कहा everywhere. You still have to define. Everywhere नहीं ना, आप बोलो इंडिया में तो बोलो, पहले इंडिया बोलो, फिर इंडिया में इतने गांव हैं, सब कुछ हर जगह हो सकता है, या कुछ सिटीज में होगा, फिर उस सिटीज में बड़ी सिटीज में होगा, टियर 2 में होगा, टियर 3 में होगा, कैसे की प्रोफाइल होगी, थोड़ा डीप सोचो। Don't ever say everywhere anyone who wants to buy my product is my customer. वो नहीं है आपका customer। And तभी आपकी कभी भी मार्केटिंग में आप उस तक पहुंचोगे नहीं, क्योंकि हम वहाँ He would know his customer to the hill. He's sold in maybe 15, 16 countries. He's selling one country, but One? yes. So Japan भी crack किया था। Primarily we sell in one country, but US. But US में सर कितने states हैं? I think we sell in about US में कितने states हैं? कनाडा गिन लिया? बेशरम। कनाडा इन्होंने 50 states है। Canada first is US. Okay, so you sell in the US. How many states in the US? About 17 states. Demographics, geography. किसको बेचते हैं? Who's the decision maker you sell? lawyers who have about 15 to 25 years of experience. वो ढूंढ सकते हैं इनको, जिसको आप ढूंढ सकते हैं, lawyers आपको नहीं, US में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है? Lawyers who have 15 to 20 years of experience are looking for a certain solution, intellectual property solution, trademark solutions for the US market, research वाले projects, ऐसे के, right? He knows his customer. Is it easier for you to find them once you know them? Definitely. And आप अब उनको कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं, LinkedIn हो सकता है, email addresses ढूंढ सकते हैं, you can go and search directories, you can list your work for certain people, right? You must know your customer. So knowing your customer, मेरा एक वो टिक कहीं है, अच्छा भेजिए, sorry. So guys, आगे बढ़ते हैं, we are moving on to multi-channel marketing. मजा आ रहा है सबको कि नहीं? Yes, sir. पक्का ना? ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैंने बोला है, let's do practical takeaways, right? So पक्का मजा आ रहा है? बता ये वो करें कैसे? Good है? है ना? मजा आया ना? चलो, okay, end में वो करेंगे. So guys, value पे मैंने आज focus किया. I have told you I've built it up onto the things that you need to understand, brought it to an equation, brought it to the practicality of it, how to close using value, and everything वो value जो सबसे ज़्यादा देगा वो जीतेगा. But अब हमारा competition है. अभी competition है ना competition market में? आपका है सर? We must outlearn them. दुनिया बहुत जल्दी से चेंज हो रही है बस. जो हम लोग पिछले साल करते थे वो बहुत अलग है जो हम अभी कर रहे हैं, और I promise you 2 साल पहले it was totally different. And so is the story for all of us. If we are not
investing in upskilling and uplearning and thinking about what's coming in our industries, we are going to be left behind. I promise you. That means you have to outlearn your competitors. उसके बाद हमारे बेसिक फंडामेंटल्स बन गए होते हैं, आदत पड़ गई होती है. How many years in business sir? 18 साल बेसिक्स बने हो, एक तरीका काम करने का. बट कहीं ना कहीं जब मार्केटिंग हम करने लगते हैं तो हमें बोरिंग बेसिक्स हटाने हैं. Right? Let's freshen it up. Let's say I'm doing an event. मैंने आज ही अनाउंस किया, LinkedIn पे डाला है, but उसका टाइटल मैंने रखा है Marketing without sales is like Trump without tariffs. It brings a smile to your face. It's not boring. It's creative, and we start thinking differently. And that is the idea. What I've actually said in that statement is, I'm aware of what's going on in the world. So is Abhay, उसने सीधे 51st state कह दिया था कनाडा को, ठीक है? But also making it a little different from what we've been doing. मैं पहले लिखा था Lead Generation Masterclass for 2025. But this is different, right? The idea is we have to think beyond the boring basics. Outwork yourself. Outwork कैसे होएगा? Creativity से. Creativity will add a flavor to your business, which is beyond, measurable. वो measurable नहीं होता. Creativity का अलग सोचो. And third, serve करो, outserve करो अपनी market को. Value create करो. Value क्या मतलब? अब आप लोग सारे, जो मैं एंड में कवर करूंगा, सारे अपने बिजनेसेस के ब्रांड एम्बेसडर्स हो. अपना बिजनेस मतलब you have to be the face of it. Thought leadership starts with you. None of you should be actually walking out of here thinking कि उनको नहीं करना है. मेरा कोई फायदा नहीं अगर मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि you have to invest in your own brand. Your own thought leadership. And मैंने यहाँ से किसी को जाने की तरफ बंद कर दो दरवाजा. जब तक यहाँ पर हम लोग सारे believe नहीं, जो करते हैं, very good, कर्म करता है. Right? There are great examples here. ईशा करती है. Right? And मेरे को बाकियों को पता नहीं है. You're starting with thought leadership. But you're already a thought leader, but now you're going to the world with it. Right? But the idea is जो भी करते हैं, kudos to you. जो नहीं करते हैं, आज हम एक प्लेज लेके जाएंगे, हम करके रहेंगे. That being said, 5 factors अब तक मैं सारे बता चुका हूँ. Can you tell me? फाइनल करते हैं, फिर हम मार्केटिंग मल्टी चैनल में जा रहे हैं, and मैं उसको बहुत स्पीड से लेके जाऊँगा. कोई लेट तो नहीं हो रहा ना? या बोर हो गया ऑलरेडी? Very interesting. Good. Okay. So they buy from you because of 5 factors. ये सारे risk और sacrifice और effort से related है. क्या होते हैं? Trust. नहीं हो गया. Trust, credibility, authority हो गया. शुरू वाली स्लाइड में. ये they buy मतलब अब उनका हमने reduce क्या करना है? ये कुछ में है. पेन में और आते हैं. अब मैं आपको 5 चीजें बता रहा हूँ. और ये इसके अलावा उनको कुछ और नहीं चाहिए. अब इसको ध्यान से देखना. नंबर 1, cost. Number 2, time. Number 3, effort. Number 4, resources. And number 5, expertise. जब तक आप उनकी ये 5 चीजें, ये उनके चैलेंजेस हैं. यही 5 है. Let's go again. Cost, effort, time, resources, expertise. People come to Advait because they don't have the expertise. But sir,
Do you actually save them time also? वो खुद करने लगे, आप उनका टाइम बचाते हैं? There you go. उनकी resources बचती हैं. उनको maybe they can be very good at software development, right? But he saves them those resources. वो US में बैठा है. Arbitrage. क्यों किसी के पास कोई आता है? इसलिए ये बचाने आता है. Time, let's repeat. Time, effort, cost, resources, expertise से मुट्ठी बंद होती है. इस पे फोकस करो. ये बचाओ उनके लिए. और जब भी पिच करना है, इन्हीं चीजों पे पिच करो. हम आपको वैल्यू कैसे देंगे? आपकी हम ये चीज बचाते हैं. टाइम, एफर्ट, रिसोर्सेज, कॉस्ट, या फिर ये सर्विस के लिए परफेक्ट है. ये सर्विस बिजनेसेस के लिए परफेक्ट स्टेटमेंट है. प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बट वही एफर्ट में ही आ जाएगा. प्रोडक्ट कुछ उसका एफर्ट कम कर रहा होगा. There are very variations to slight variations. So let's jump. There are 9 different ways. I'm going to go very fast about it, and then we'll open it up for question and answers. There are 9 different ways that you reach out. नहीं. Lead generation नहीं. Client acquisition. हमारा सबका काम is not to generate leads. We need to acquire clients. Everybody agrees? Yes. Leads को तो लोग डेटा को भी leads कहते हैं. हम आपके लिए leads ना देंगे. What does it even mean? It means nothing actually. So आज से हम लोग यहाँ पर अपने businesses में ये 9 channels ऐड करेंगे. These are fully researched, guys. That means these are it. इन्हीं पे काम करना है. अब जल्दी से समझे. Number 1, डायरेक्ट. इधर देखने की जरूरत नहीं है, इसकी फोटो ले सकते हो, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो. डायरेक्ट में 4 चीजें होती हैं. 3 एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरे को सुनो. Number 1 होता है फेस टू फेस मीटिंग्स. जितने दरवाजे खटका सकते हो, जितने लोगों से मिल सकते हो, वो डायरेक्ट है. जितने अब इवेंट्स पे जा सकते हो, डायरेक्ट है. इवेंट्स पे जाओ, लोगों से मिलो. नेटवर्किंग, ये टाई में आते हो, नेटवर्क करो, दिस इज डायरेक्ट. बट इसमें सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा वो है आपका रेफरल नेटवर्क. The biggest element of direct is your referral network. If you ever want to work on something, this is what you start with. This is what you focus on. This is you go back and say, ये तो मेरे को nail करना है. And please document, record things. You can't afford a CRM, do it over a sheet. One Excel sheet पे सब कुछ maintain हो जाता है. But please अपने records रखो. Please reach out. Please remind yourself of the objection people have. Because that makes you improve. And आपका number 1 bucket हमेशा के लिए direct रहेगा. And आपको सबको direct पे सबसे ज़्यादा काम. Number 2, ये हमारा दिल है. दिल नहीं धड़केगा तो कुछ नहीं आएगा. दिल का मतलब है ये रुक नहीं सकता. रुक नहीं सकता से what do I mean? Consistency. Outreach सबने सब कुछ ट्राई किया हुआ है. रैंडमली करते हैं. हमने जी लिंक्डइन ट्राई किया था, चलता नहीं है. ईमेल ट्राई की थी, कुछ नहीं आता जी. ईमेल मार्केटिंग इज डेड. And people will give all the excuses they can give because they have not nailed it yet, or supply demand is not in their favor, or their messaging positioning is not resonating with the other person. But it will always, all of you are service businesses, mostly आपने यही बोला है. Mostly B2B, एक दो B2C होंगे. B2C कौन है? You are B2C. Okay, fair. B2C कैसे?
direct clients. Direct clients. Okay. HNIs है? So you're in B2B. आपको बस वो लगता है HNIs जैसे ही आ जाते हैं, it turns into a B2B mindset. Because they have to sell through a business or B2C. बाकी सब जो B2B है, आपके लिए भी actually है. The outreach is LinkedIn for B2B, and because you're in insurance and financial advisory, similar आपके लिए. Number 1 is LinkedIn. Number 2 is emails. Number 3 is messaging. Number 4 is calling. Number 5 is physical mailing. अब आप लोग कौन से ज़माने की बात कर रहे हो? I got some of my best results today. I repeat कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए. Don't do LinkedIn. Anil asked me, he's going to start LinkedIn. Anil, don't do LinkedIn until it is not linked to emails, until it is not linked to messaging, and until there is no some calling involved. Do it as one, guys. This is your outreach, this is your heart. And calling, जिनकी teams बड़ी हो गई हैं, let's say Advent has a big team. Advent is 120 plus. आप कितने? Abhay has a big team. Anil has a big team. When you can afford बोल रहा, because सारे लोग नहीं कर सकते. But when you can afford calling, add it to your repertoire. When you can afford it, please add calling, because and don't do calling without the combination I told you. Combine them and फिर इसकी power देखो. Outreach is the heart जो धड़कता रहना चाहिए और जो आपको सबसे ज़्यादा business देगा, because outreach is prospecting. But एक 50% business कुछ और भी देता है. Third is partnerships. ये आप लोगों को सबको गलतफहमी है कि हम लोग बड़े businesses हैं. We are in the small and medium business categories. I don't see any big business over here. Not that big, कोई है तो बताओ. But I don't think so. So when you are a small and medium businesses, this is the key to success. There are 5 elements of partnerships that you must have a few of. Joint ventures, strategic alliances, affiliates, rainmakers, or white labeling your services. I repeat. Joint ventures, strategic alliances, affiliates, rainmakers, or white labeling your services. I know companies जिनका एक पार्टनर है यूएस में, एक, and वो अपना सारा बिजनेस वहीं से करते हैं. For a small and medium business, if you want to venture out internationally or into different states or in like markets which are not very localized, must have partnerships, must have alliances, and please look for complementing businesses. हर कोई competition नहीं होता है. हमें ये सोचना बंद करना है वो मेरा competition मेरा काम खा जाएगा. कोई भी किसी का नहीं खा सकता. But आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अगर Advent है, he can actually work with a bigger IT firm and support them. वो छोटा सा प्रोजेक्ट इनको मिल सकता है. Do you know the biggest tech companies? Infosys, Cognizant, TCS, any name you take, they outsource. The bigger projects, they have OEM, like an OEM, manufacturing में OEM होता है, they always outsource a part of their business. Why can't we be one of those? हमेशा, देखो same industry में भी हो सकता है, complementing businesses भी हो सकते हैं, but जो अपनी partnerships पे काम नहीं कर रहा है, और मैंने crack किया था, इससे मेरा काम एकदम चल गया. Partnerships. And once you crack it, you nailed it. You're very strong in UK market. Partnerships या कुछ होएगा जो उसको strengthen करता है.
कोई वहाँ बैठा हो, कोई कुछ, and you always have to think differently. You cannot think the same. Fourth, मैंने बोला हमारा मार्केटिंग क्या होता है? ब्रांड की स्टोरी, उसकी पोजीशनिंग, उसकी मैसेजिंग, उस सारी चीजों की, उन तीनों चीजों की डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट को करता है। अगर आउटरीच दिल था, तो ये वो नर्व्स, ये सारे वेन्स, नर्वस सिस्टम यही है। ये ग्लू है जो आपकी पूरी चीज को संभाल के रखती है, इसने पकड़ा हुआ। कंटेंट के बिना, कंटेंट मार्केटिंग के बिना, you are not visible. Your websites, everything. This is how you are visible to the world. You want to create great buying environments? This is where you start. This is what you fix. Messaging is everything. Positioning is everything. You need to know your customer. The best companies ऊपर लिख देते हैं ये हम इसको बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है we don't want anybody else. We don't want to waste our time because you are talking to the wrong people. But if you are talking to the right people, you will never be wasting your time. But the idea is, this is very important. Story, brand जरूर बनाओ. Book recommendation, Donald Miller, Story Brand. I've read it thrice now. I just absolutely love it, and that is what I use personally to build stories for my customers. Okay, so that's my recommendation. Yeah. Number 4, Can you repeat the name? Donald Miller, Story Brand. Number 5, the funnels. आपने बोला था sales funnels, किसने बोला था sales funnels? आपने बोला था. Exactly what sales funnels. This is sales funnels. हम लोग इतने लीड जनरेशन में सोचते हैं, we never think about demand generation. The first 3 elements I talked about, the direct, the outreach, and the partnerships, those were the push elements. धक्का, हम धक्का देते, but without pull, धक्का पड़ता नहीं. And push जो है scalable नहीं है, email marketing scalable है, but पैसे बढ़ जाते हैं. जो demand generation है, this is scalable to any extent. That means content एक लिमिट में बना सकते हो. ये हजारों में डालने का नहीं चलेगा. But you need to be present everywhere. But this is what makes you scale. This is your sales funnel. These are your campaigns. यहाँ पर ऑफर डालना है. जो मैं ऑफर की बातें कर रहा था, उसको इधर डालना. These are your sales funnels, typical funnels जिसमें you are building a step to bring people in, open the doors, talking to them, upselling, and getting them within your environment of trust, credibility, and authority. बस वो दिखाना, उसी को build up करना है ताकि आपसे जब वो मीटिंग में आए तो वो बिके हो already. What SEO used to be, SEO तो content में हो जाएगा. But what SEO used to be, our communities से होता है. Communities are, you need to be part of, you need to know who your customer is, and you need to be part of all groups, communities, forums, जहाँ पर भी आपका customer है. उससे ज़्यादा, please अपनी start करो, अपनी community start करो, अपनी newsletter start करो, अपनी warm emailing list start करो, अपनी कम्युनिटी बनाओ. जितनी कैप्टिव ऑडियंस होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा ये सीड्स है. ये है सीड्स. ठक 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 उसको ट्रस्ट बन रहा है धीरे धीरे धीरे, और वो आपके साथ कभी ना कभी काम करेगा या करेगी. You always have to remember, please work on communities. Communities will be your biggest, वो जैसे कहते हैं buying environment में सबसे ज़्यादा है communities करती है. Last 3 guys, platforms. Every business builds trust, credibility, authority through platforms. इसमें आगे listings, biddings, and classifieds. Advent, Upwork is a platform. Clutch is a platform. ये IT वालों के लिए. Designers के लिए Behance is a platform. Real estate कोई listing कर रहा है US में, Craigslist is a platform. Anything where you
are buying onto the platform's trust, credibility, and listing, bidding or classifieds of your services is a platform. ये बहुत ज़रूरी होते हैं जब अगर पैसे लगते हैं, जिसके पास रिसोर्सेज है उसको ये छोड़ना नहीं है. लास्ट टू रह गए. Authority. Authority is when you turn into, the giver now. Your events, आपके कंपनी के events, आपके speaker engagements, आपकी publications, आप event पे display करने लगे, वो भी authority का part. If you are displaying, I saw you in Ludhiana, he was doing tap card display, he was sponsoring something. That is authority actually. दिख रहे हो. And authority build करनी बहुत जरूरी है. Authority beacon is the strongest beacon क्योंकि ये जब चलने लग जाए. I'll give you examples of authority beacons. हरित authority beacon पे काम करता है. जितिन तलवार authority beacon पे काम करता है. देखो कोमल तलवार authority beacon. सिमर authority beacons. वो उनका ब्रांड बढ़ जाता है. उनकी authority से काम आने लग जाता है. उनका कंपनी का काम उनके नाम से आता है. एंड ये बड़ा फर्क पड़ता है. एसके he's in the US but he's working on his authority. It would not have been the same a few years ago but it has to be worked on. I'm working on my authority very strong. कि मैं किताबें लिख रहा हूँ इस पे काम कर रहा हूँ. Right? Last guys, performance marketing, paid ads should never वहाँ लिखा हुआ है करो और मैं बोल रहा हूँ never be used for B2B to start a fire. आप जला नहीं सकते उसके साथ. अगर आपके campaigns अच्छे चल रहे हैं then you can put fuel to the fire through ads. You can put money in your sales funnels but you cannot start कि मैंने ऐसे डाल दिया एक ऐड डाल दिया मेरा काम आ जाएगा. नहीं आएगा. You're selling $5,000, $10,000 at a time per month at a time. ऐसे नहीं आता. But you can bring them into your trust circle through these ads, through attracting them. Events तक ज़्यादा लोग ला सकते हो. So don't use ads in B2B to start fires. Use them to fuel fires. Was that helpful? Sorry, टाइम थोड़ा खींच गया ना, ज़्यादा कर दिया. 5 minutes में, because ये सबसे लास्ट में आपके बारे में. बोर तो नहीं किया किसी को? मजा आया? थक गए? गर्दन जकड़ गई? सारे स्ट्रेच करेंगे भी? कोई बात नहीं. मजा आया कि नहीं आया? Yes, yes. Right. Okay, guys. Final. अब हम सब के बारे में. This is the game changer. How many entrepreneurs here? जिनके अपने business है? I know here. Almost all. Start thinking like that. पापा की कंपनी नहीं होती. क्यों जी? So that being said, guys, this is it. This is you. Let's take a pledge to start becoming the thought leaders of our companies. Let's become the brand ambassadors of our companies because this will feed into your content, your community, your campaigns, your authority, all that, your direct, your outreach, your partnerships. Because you as the face suddenly can create more value for your company than you think. She's the face of the company. And you have to project it. You have to create your story now. ध्यान से सुनो इसको. हर इंडिविजुअल की अपनी एक स्टोरी होनी चाहिए. Work on your story, work on your messaging, work on your positioning, and then work on its distribution. You must run your own brand concurrently, together, parallelly with your company's brand. Stop focusing only on your company's brand. Let's be leaders now. Let's start working on our brand. And उसको करने के लिए हमें सिंपल चीज जो करनी है, यही स्टोरी,
positioning, messaging, and last में जिसका मैं सबसे गिरती हूँ, I want somebody to raise their hand and say, I'll make you accountable because I need help. मैं consistent हूँ. Thank you. Thank you. मेरे को help पता है क्यों चाहिए? सब कुछ करता है. But कोई एक चले जाता है या कुछ हो जाता है, हम consistent नहीं रहते. मैंने एक YouTube चैनल बनाया. So passionate. मैं बैठ कर इंटरव्यू लिया था. I'm so passionate about it. And वो जैसे मेरा वीडियोग्राफर गया, आज 1.5-2 साल हो गए, मैं बनाया नहीं. बहाने हैं सारे. So आज actually pledge मैं आप लोगों के साथ यही ले रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ. आपके साथ मैं भी करूँगा because I get almost 50% of my business through LinkedIn now because my profile attracts people. And I realized that okay, now I'm gonna work on more business, and this is what we have to do. Guys, I hope these 3 examples will encourage you. Everybody knows Shantanu from Bombay Shaving. This is the real example of personal brands driving business growth. There is a second name, Simmerpreet सब जानते हैं? प्रत्येक ग्रुप उसके वीडियोस अब चलने लगे. कुछ 1-2 साल पहले स्टार्ट किया था देखने, बट अभी दिखने लगे ना. And वो देखो हमारी सुपरस्टार ईशा. She is consistent. She goes for it. And Isha, does it help you feel good about not only yourself but your company gets a good feel about it? Isha has actually created a magazine called the Executive Outlook, where they interview. कितने interviews कर चुके हैं आप लोग? 50 guys. Let's hear it for you're on the screen, Nisha, because you deserve it. You've really actually gone ahead and become the thought leader, and I should be inspired from it. That being said, guys, that was my time. I hope I was helpful. I hope I gave value, and I hope we keep in touch. Any questions? Now is the time. मजा आया कि नहीं? Yes. बहुत मजा आया कि लल्लू सेशन था? हाँ? अबे जी पास? Absolutely. चलो पास गए. Flying color से पास. Any questions? Yes, sir. Mike. Hi, this is Rajneesh. So I have 2 things. Like one is price versus value, right? So most of the time we have seen that okay, let's say 1,000, say or maybe $100 ka bag, right? Bigger companies are selling $20,000 like overpriced, right? So वो price versus value का तो वो कैसे सेट हो रही है कि आपने एक छोटी सी चीज है उसको ओवरप्राइस करके सेल करोगे. वो ब्रांड है, ब्रांडिंग है. Okay. ब्रांड की perceived value, ब्रांड की जर्नी, ब्रांड का luxury element. What you're talking about is a clear brand. अभी US वाला. Why does an Apple iPhone sell for 100,000 easily, and why does that same, let's say, Redmi phone not sell? Right? And that's same. अब Redmi का ₹1,00,000 का मेरा, they have to then build that perceived value, right? So value versus price में branding is totally different. We all wear t-shirts, and I'm telling you, there is a 500 rupee jeans and there is a 500,000 rupees jeans in the Chandigarh market. Right? And it's all about the brand. It's perceived value, perceived luxury quotient. When you wear something, how are you perceived? और एक याद रखना, एक पॉइंट तक जब पैसा आ जाता है, लोगों को पता ही नहीं होता कैसे खर्चना है. वो they try to spend it on things to be different or look the part. वरना वो बताएंगे कैसे कि उनके पास पैसा है. That's it. Yeah, and Sure. another thing is like follow-ups, right? So, for example, calling or maybe follow-ups. For example, insurance के follow-ups आते हैं. If you go some insurance agent
and give you a number, okay, I want to buy some insurance. So again, वो daily basis पे calling. So is it not? It's like something irritating to the customer or to the सामने वाले को कि क्या है रोज call करता है. So is it good to follow up like frequent or No. how you decide to follow up? मैंने तो ऐसे कवर ही नहीं किया था follow-ups, पर आपने जो बोला है कि if somebody irritates you, is it not your personal experience that you don't want to receive so many calls? Right. And that is the answer. So that feedback the company should understand. The problem is we're living in a world of targets. We're living in a world where people don't empathize with the other person. क्या फर्क पड़ता है एक मैं कॉल कर दूँ? But a better way would have been my formula of outreach, combined outreach. That means you reached out to somebody, when they said something, you sent an email that I would be maybe calling at this time, and then it's a better journey to call. If they're not taking something, you cannot force people, you cannot convince them, you can persuade, but trust बनानी है. अब फोन पे कितना मुश्किल है आपका कोई भी ट्रस्ट. आप अपनी बीवी से लड़के बैठे हैं, वो आपको फोन करोगे, मैं नहीं सुनता, क्या करेगा? You know, the idea is you cannot time the other person's reaction. You have to build it up. Fair enough? So please, anybody who's into hardcore selling and follow up, और चलते नहीं. You cannot, almost suffocate a person into buying. Never happens. Sir, Until then even. Please. मेरा भी follow up पूछो sir. Sir, please go on. Ladies No, sir, you Oh, already. sir, पूछो. हाँ, सर जैसे इनका वो क्वेश्चन था कि हमें फॉलो करना चाहिए नहीं करना. जैसे इन माय बिजनेस आई डोंट फॉलो अप विद एनीवन. अगर तो वो सीक्वेंशियल है तो मैं बात करता हूँ, नहीं तो मैं कभी उसको कॉल नहीं करता. तो हमें प्रैक्टिकली फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूँ. Please remind them you exist. Be visible to them. There are ways to follow up. Now I'll actually give the right answer. There are ways to be seen. Until or unless somebody is seen by you, touch points. उसको आपकी कोई पोस्ट दिख गई, उसको आपका कोई वीडियो दिख गया, उसको आपकी कोई ईमेल चली गई फोन के अलावा कि यार बाय द वे आई एम डूइंग सो एंड सो थिंग, जस्ट इन केस मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं एक इवेंट पे जा रहा हूँ, आर यू आल्सो गोइंग देयर. इट्स अ जनरल वे ऑफ सटल वे ऑफ किसी की नजरों में रहना. अब रोज तो नहीं करूँगा ना, मे बी वंस इन 15 days or something, मैं उसके लिए विजिबल हूँ. जितना विजिबल रहोगे, बट उसको जब चाहिए होगा कोई भी आपका काम, तो इमीडिएटली आप करेगा. टाइमिंग हमेशा मैटर करती है. So yes, you have to follow up in a way that you are visible to them. That's why I talked about warm emailing, warm list. एक broadcast list हो सकती है आपके पास. आप अगर WhatsApp हमारे वो है नहीं, डिजी से विपिन जी, बट वो WhatsApp पे हो सकता है कि you are just maybe once a month sending them something of value, not pitching your services, sending them something of value. जो उनको generally आप help कर रहे हैं कि यार ये चल रहा है, इसको ये ऐसे बचा के चलो. फाइनेंशियल में है, आप बोल सकते हैं कि ये चल रहा है मार्केट में, इससे बच के रहना. अब वो this had nothing to do with your pitching, but उसको आप याद रखो. समझ रहे हो आपका क्वेश्चन? So I was asking, coming back to his question, branding, where branding was there, value creation versus price, cost. So is it related to the kind of vision of the leader who is running the show while compromising the cost versus valuation, or how you go about it? Achha, okay, so I'll rephrase the question. He was saying कि cost and value addition that he asked, and you said there is a Jeep 550,000 bucks. So you said it is all about branding also. This branding and the pricing that comes with the vision of the person, the leader who is leading the show. So I'll tell you something. What line of work are you in? HR consultant. You're in a service business. Yes. Okay. Your relevant question should be in the service line. If we start talking about Apples and the other brands, Mercedes का क्यों होता है कुछ है, it's not relevant to anybody. Number one.
नंबर 2, हमेशा सोचो कि आपके ब्रांड में आपके कंपटीशन में कौन है। आपने जो कंपैरिजन करना है, आपके उसमें बेस्ट कौन है या आपका कंपटीशन कौन है, एंड उससे मेरे को अलग कैसे दिखना है, वो वैल्यू क्रिएशन करना, राइट? That means value and price is all dependent upon the name, the trust, the credibility they've built over years. Let's say law field में there is a company sitting in Bombay, has been in the business for 40 years, and you say, I will do a better job than them, right? You have to then prove that cycle. You have to prove that cycle, and that is the art of branding and decommoditizing. It is never, see, हम डिबेट के लिए हम जितनी मर्जी बातें कर सकते हैं एप्पल्स के लिए, बट यहाँ पर एप्पल वाले कोई नहीं। समझ रहे हो? अपना बिजनेस पे सोचो। B2B में हमेशा आपको अपने कंपटीशन से थोड़ा सा बेटर कैसे बनाता है, अपने ऑफर्स में अपने आप को डिकोमोडाइज करना। The reason why I asked you is, so in my industry, pricing is one of the major aspects, and this is, I guess, तो जाने लगे हैं। then I will stop asking. I will ask you in person. Okay guys, that's my time. We've taken a lot of time. Thank you for being a great audience.